Okay. I hope my voice is clear, right? Yeah. So, good evening, everyone. Good evening, all the students. It's really my pleasure so that I can connect with your group and I can take this webinar today. I will try to make this webinar as interactive as it could because I know one way webinar at times they become very boring. Okay. So let me quickly share my screen and I request all the participants so that you can just post your questions in the chat box. I will be taking all the questions. So what I want to know, anywhere, if you think you're stuck and you want to ask any of the questions, you're free to ask any question. Fine. So ma'am, I hope my slide is also visible. Yeah, Okay. it's visible. Okay, so let's start. So the topic which I have chosen for today's webinar is a very simple topic so that everyone, can get an insight about artificial intelligence, machine learning, data science. These are very much talked about topics nowadays. Fine, everyone is talking about these things and we have been listening about these things in the market and everywhere. Before starting with my topic, let me quickly introduce my company, where I come from. So we are an IT organization based in Jaipur, Rajasthan, working in different verticals and domains. Okay, and we are also present in Western markets. Our vertical C, we believe in customized application development, digital transformation, data science training, data science projects, technology, process and consultancy, plus in EdTech. So basically what we are doing, we are dealing in the field of data science, machine learning and artificial intelligence exclusively. Okay, now I'll present in front of you a very shocking slide. You can just see. Okay, yes. So you can see from my slide, this is where we are landing. I have done a rough calculation quickly just between South Korea and India. And these figures are about the formal training workforces. Actually, what is happening? Our students are getting the degrees. We are we have high reputed institutes out there. But what we are doing out there in the institutes and the organizations, we get those degrees, we learn our courses and we just pass out, and then after passing out we have this complaint that we do not have actually the kind of jobs which we deserve. You see the calculations which have been done over here. This is about the formally trained workforce. We say in South Korea 96% of the population is trained workforce, and in India you just see the figure, it is only 2.3%. I'll tell you what does this mean. So what are the key findings is that the freshers make up only 15% of the overall talent demand. This is where we are lacking, because whatever needs the company have, I can only talk about data science, artificial intelligence and machine learning out there. So whatever the market is needing, we can only fulfill only the 15% of the demand. Employability of India's youth has remained stagnant. Stagnant means it is fixed. It is not increasing for the past 3 years. The skill and employees seem to emphasize our domain knowledge, adaptability to the environment, and learning agility. Plus, majority of the recruiters, let's say 53% of the people, say that the applicants do not meet their requirements. You are seeing this? Just having a degree, let's say you have a degree of MBA, BCA, MCA, BBA, BTech, anything. Okay, just having a degree is not at all enough. Okay, you need to bridge some gaps. And this is what my next slide says. Okay, I think my voice was gone. I was muted, but now am I audible? Anyone can just type in the chat window. Can you get my voice? Okay, thank you so much. So this is where we stand, okay? And we want to reach over here. What are these? These are the companies which we aspire to. And this is the gap, okay? So organizations like us, we try to fill in this gap. This is what do we do, okay? Now, let me come on to quickly that what all contents which I'll be covering today.
I'll be taking these contents like what is artificial intelligence, difference between AI and normal programming, real world application of artificial intelligence, and some of the small practical examples if we are given the time of. Okay. Now, again, coming on to this, before starting, just I want students to respond in the chat window. Have you ever heard about these terms, artificial intelligence, data science, machine learning? इनमें से कोई भी term सुना? Anyone, please. I want students to participate. As I've already told you, I don't want this a boring session. Okay, thank you so much, Mehek, for responding. Aditi is responding. Great. सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्यों ये वेबिनार आज रख रहे हैं. वेबिनार रखने का मेन एम यही है ताकि यू कैन गेट एन इनसाइट अबाउट दीज टर्म्स. सेकंड थिंग, वी कैन फिल इन द गैप. यू मस्ट आल्सो अग्री. ठीक है, जब हम करते हैं तो जब एक डिग्री के लिए हम व्हेन वी आर कंप्लीटिंग अ कोर्स, देन देयर इज सम गैप कि मार्केट क्या डिमांड करती है और वेयर आर वी स्टैंडिंग. फाइन, देन आर देयर सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु गो आउट ऑफ द बॉक्स, वो अपने आप को एक थोड़ा सा इनहैंस करते हैं, दे गेन सम नॉलेज आउट देयर and they can reach out for very good jobs, but everyone is not able to do it. Fine. Okay, so again let's come on to this, that is artificial intelligence. My question was ki, have you heard of? Many of the people responded. Chalo, can anyone tell me what is the real time application? kahan pe suna hai, where you can see ki acha yahan par iska application hota hai, chahe wo machine learning ho, artificial intelligence ho ya data science ho. Anyone, just tell me the real time application. एक real time application सब अगर बता सके. Come on, any participant can. Okay, robots, very good, Sanyukta. One application is robots of artificial intelligence. What about others like airlines? Fine. कुछ जो आपको आसपास daily life. See, now artificial intelligence is a part of our daily lives. GPS, okay. Is application software that works on real time like railway reservation. Very good, Aditi. But I just want, okay, let me come on to that. सब लोग Spotify, Gaana.com, Netflix, YouTube, Instagram, Facebook, ये सब use करते हैं. These are the some things which we are using in daily lives, and in these times of lockdown, जब सब घर पे हैं तो शायद majority of the time mobile phones पे ही निकलता है, right? So all these applications which I have just named, they are using artificial intelligence, machine learning algorithms extensively. Okay, I'll be touching those points, but before that, let me start my slide and presentation. So see, what is artificial intelligence? It involves using computers to do things that traditionally require human intelligence. Simple hai. Abhi jo pehle we were saying that humans only can do, now computers are doing in the similar fashion like humans do. What is the difference between simple computers and humans? Humans do things after thinking. अगर हमें कोई काम देते हैं, हम पहले उसको देखते हैं, we analyze things, हम देखते हैं इसको करने से क्या consequences होंगे, and then we try to do these things. If we talk about traditional computer programs, वो इस तरीके से नहीं थे. ठीक है, आपने उसमें जो data feed किया and you used to get output accordingly. But artificial intelligence has changed the market. Okay, in artificial intelligence, it is not like this. It is acting like the human is doing things. आपने Alexa को भी देखा होगा. Alexa, Siri, Google Assistant, they are all examples of artificial intelligence. Okay, so artificial intelligence again means creating an algorithm to classify, analyze and draw predictions from data. Okay, these three terms are very important. We are classifying मतलब categorize करना, analyze करना मतलब ये जो data है इसमें से क्या हम पता लगा रहे. Then drawing predictions ki what are the future predictions, what can we calculate, what are we seeing from the given data. It also involves acting on data, learning from new data and improving over time. Again, this is very, very important. The artificial intelligence algorithms, they have this property that they can improve over time automatically, just like tiny human child growing up into the smarter human adult. Okay, suppose you say a human child that this is A, this is also A, this is also A, fine, and this is also A. तो आपने क्या किया? You have taught this. Now, whenever the human child will see somewhere this written, sorry, this, वो क्या कहेंगे? Okay, that this is A. कैसे सीखा? क्योंकि आपने उसको बताया कि एक ये होता है और
ये भी बताया कि these are not A. So what are we doing? We are telling a kid that these things are A and these things are not A based on to this classification कि A कैसे लिखते हैं और क्या चीज A नहीं होती. A human child can detect. Same in the same fashion, artificial intelligence algorithms also work. Fine. Now, the difference between AI and the regular programs define all possible scenarios and only operate within those defined scenarios. मतलब आपने कहा एक simple computer का diagram पहले बनाते थे कि let's say that this is the input, this is your processor and this is your output. Fine. So the computer will be, you will be providing the input, your algorithm will be running that particular, will be accessing on that input and the output will be produced. ठीक, इसके अलावा जो आपका ट्रेडिशनल एल्गोरिथम है वो कुछ भी नहीं कर सकता. बट AI trains a program for a specific task and allow it to explore and improve on its own. Let me give you an example. Suppose you are checking some medical history of a person. आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम बनाया है जो ये पता लगा सकता है कि आने वाले कुछ साल में that the person will be infected with diabetes or not. Fine. तो क्या करेंगे, उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री देंगे. यू विल ट्रेन द मॉडल, मतलब एक मॉडल बनाओगे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एक एल्गोरिथम बनाओगे एंड देन द मॉडल विल डू द फ्यूचर प्रेडिक्शन. लेट्स से द मॉडल विल किस तरीके का आउटपुट आएगा कि देयर इज एन 80% एक्यूरेसी दैट द पर्सन will be infected with diabetes in the coming future. So these things are so good, no? If you talk about medical line, अगर आप कुछ चीज पहले से प्रेडिक्ट करके बता सको, and why not just medical line? I'll tell you, artificial intelligence is everywhere. एक बहुत common example मैं लेती हूँ, जैसे suppose YouTube, और let's say if you are on the OTT platform, Amazon Prime देख रहे हैं, Voot देख रहे हैं, Netflix देख रहे हैं, तो you must have experienced this, that when you watch a similar kind of movie, अगली बार जब आप आओगे किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पे, it starts showing you the similar kind of taste movies. Agreed or not? Come on, ऐसा एक्सपीरियंस किया है किसी ने? You can respond in the chat window, students. Again, let's make the session more interactive. Very good, Sayukta. Thank you so much. What about others? Everyone must have experienced this, no? In Gaana.com. In fact, when you go for shopping, suppose आपने Myntra.com से कुछ shopping किया है या Amazon से कुछ shopping किया है. Suppose you're searching for ACs. Fine. Now, whenever you will be searching, आप Amazon से shift हो गए Facebook पे, तो similar kind of app जो एड्स Amazon पे आप देख रहे थे वो Facebook पे भी अपीयर करने लग जाते हैं. Why? Because आपने लॉगिन आईडी सेम यूज किया. ठीक, सपोज xyz@gmail.com. The same login ID is for Zoom. The same login ID was for Facebook. The same was for Amazon. So your data was stored out there. Your searches was stored out there. And then background में जो artificial intelligence का algorithm है वो उसने क्या किया, similar kind of output आपको बार बार दिखाना शुरू किया. Okay. Now coming on to what is not AI, like Microsoft Word. So Microsoft Word is not an artificial intelligence algorithm because it cannot improve on its own. उसमें आपने जो एक बार टाइप कर दिया, that is done. But recognition software can get better at recognizing faces that in the longer it runs. मतलब जितना ज्यादा आप फेस रिकग्निशन एप्स को लॉन्ग टर्म में चलाओगे वो उतनी बेटर एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट्स देगा. So I hope you're getting the point of artificial intelligence and what is the difference between AI and the normal programming algorithm. Fine. Now, one very important thing is that to apply AI, you need data. This is the main thing, and lots of data. Now, what do you mean by lots of data? If you want that your artificial intelligence algorithm should come up with a good accuracy, मैं बार बार ये term use कर रही हूँ, accuracy. Accuracy मतलब कितने अच्छी तरीके से आपका मॉडल predict कर पा रहा है चीजों को. ठीक है. So if you want that the accuracy should be high, then the algorithm should be feeded with lots of data, like in hundreds, thousands, and lakhs of data. So AI algorithms are trained using large data sets so that they can identify patterns, make predictions, and recommend actions, much like human would, but just faster and better than humans. Now, where is AI? As I've already told you, it is everywhere. जैसे task automation के अंदर,
Suppose there are some back office tasks, okay, which include some clerical work. You can apply your AI algorithm onto that, and the repetitive task can be done by the AI algorithm, but in a faster manner. कस्टमर सपोर्ट, ये भी कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा. सपोज यू लॉग इन ऑन टू सम बैंकिंग एप्लीकेशन. वहां पे जैसे ही आप बैंकिंग एप्लीकेशन पे जाते हो, एक चैट बॉक्स साइड में अपने आप पॉपअप हो जाता है. हैव यू एक्सपीरियंस दैट थिंग? And it starts asking you, okay, can I help you, what do you want today, and so on. So that is not actually a real person who's sitting there. It is a chat bot. उन्होंने robot बना दिया, एक chat robot which is trying, और वो इतना ज्यादा trained है कि वो आपके application, आपके need के हिसाब से it keeps on giving you the answers. So this is one of the application of AI. Coming on to social media, like Facebook uses AI to recognize faces when you upload photos to Facebook. It puts a box around the faces in the photos and suggests friends names to tag. ये भी बहुत लोगों ने experience किया होगा. Have you experienced these things? Come on, students. I'm just waiting for your response. Have you experienced? Okay, Sayukta has responded. What about others? आई थिंक एवरीवन हैज एक्सपीरियंस. जैसे आप अपनी फोटो उसमें पोस्ट करते हो, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके सामने क्या हो जाता है, एक स्क्वायर बॉक्स बन जाता है, ठीक है. और फिर वो आपको कहता है ओके यू कैन टैग दीज पीपल और नॉट. तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, दे आर द एक्सक्लूसिव, यू नो, दे यूज दीज थिंग्स एक्सटेंसिवली. Coming on to self-driving cars, ये भी सुना होगा. Tesla has recently is very much into talked about because of their self-driving cars. So they are also using artificial intelligence algorithms. No, definitely computers can make your life easy, fine. So if you have, let's say, 10,000 documents and you want to find the word AI, or you want to create 20 copies of the same document, definitely computers can do it very fast. Okay, they are very good at calculation, storing, and sorting the data. Now, with this skill, computers have become ubiquitous and have already transformed the world. So we cannot deny the existence of these things. Okay, but definitely there are many things which the computers cannot handle. मतलब अगर हम अपने ट्रेडिशनल एल्गोरिथम के साथ चले तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडिशनल एल्गोरिथम्स नहीं हैंडल कर सकते, ठीक है. बट इफ वी कैन कम अप विद द सॉल्यूशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, then definitely we can have solutions out there. So that is where the AI comes for rescue. AI कब आ रहा है rescue के लिए? Where the traditional algorithms fail. Okay, so like a lot of problems, they need decisions, complex thinking, or intelligence. What is intelligence? When you need to think, you need to analyze, and then you need to react. Okay, so AI is the technology that can solve this kind of problems. So you do not have to tell AI what to do. Instead, you have to give lots of example of what is right and what is wrong. Remember the example which I have taken for a human kid. What we were saying, a ऐसे लिखा जाता है, ऐसे भी a लिख सकते हैं, इस तरीके से भी a लिख सकते हैं. This is not a, this is not a, this is not a, this is also not a. तो हमने क्या किया? We have given the correct examples and we have given the wrong examples. After this, whenever the human child will see this somewhere, तो क्या करेगा? उसको relate करके देखेगा कि अच्छा this is not B, this is not C, this is not D, but this is what? This is definitely A. Similar fashion, the AI also works. Okay, just like the human does. So it can recognize the voice, find what is in a picture, diagnose a disease, detect fraud, and so on. These things could not be automated because one could not tell a computer how to do them. Okay, so the artificial intelligence algorithm is working itself. Now I'll tell you, suppose 10 years or 20 years back आपने ऐसे सोचा होता कि मुझे जापान जाना है या कहीं ऐसे कंट्री पे जाना है जहाँ पे लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती और आपको जापानीज बोलने नहीं आती और whatever language they are speaking. So it would have been very very difficult. Why? Because क्या करना पड़ता वहाँ पे जाके मे बी you need to have a translator जो आपके language को convert करता और उनकी language को आपके लिए convert करता. But now things are very easy. If you do not know the language, simply use Google Translator and the Google Translator will do things for you. So this is the power of artificial intelligence. Come on students, before moving ahead, just quickly tell me, are you understanding the concept or not? समझ में आया what is artificial intelligence?
AI is its own IQ. Very good. Yes, Aditi, very good. Very good. You have answered. It has. That is why we are saying no. IQ is intelligence quotient. Correct. So we are saying that AI is something which has its own intelligence. Okay, it is making decisions based on to own intelligence, not on human intelligence. Initially human is making the artificial intelligence algorithm, they are feeding something. आपने सबने वो एक मूवी देखी होगी ना, रोबोट, रजनीकांत की रोबोट मूवी आई थी, ठीक है, उसमें तो खैर क्योंकि इट वाज अ बॉलीवुड मूवी और वो बहुत ज्यादा उसमें उन्होंने ड्रामा क्रिएट किया था, बट यस दैट इज व्हाई द रोबोट्स वर्क. आपने उसको एक बार ट्रेन कर दिया and then they start working onto themselves, then they try doing things on themselves just by learning from the environment से सीखी चीजें और फिर उसके बाद उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं. So very good point which was raised by her. What about others? There are so many participants. Come on, students. See, again, if you are learning, then it's good, worth giving 1 hour or 2 hour of your for any of the session. Now, coming on to the real world application of artificial intelligence. See, so when we talk about artificial intelligence, एक बहुत common सी term बार बार हम सुनते हैं. Let me draw a sound diagram. So this is where artificial, अगर एक 3 circle बनाए मैंने, the outside circle is artificial intelligence, then the second one is machine learning, and the inner one is deep learning. ये term सुने हैं, deep learning, machine learning, artificial intelligence, ये term सुने हैं पहले? Artificial intelligence के लिए कई लोगों ने yes किया था. Have you heard about machine learning and deep learning also? Okay. Now I'll tell you what is the difference between them all. कई लोग इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि they are same. कुछ लोग कहते हैं नहीं ये तो बिल्कुल ही अलग अलग चीजें हैं. I'll clarify you today. Artificial intelligence is a very broader term. It includes everything. ठीक है. Now what are everything? ये जो बीच का गैप है ये क्या है ये बताऊंगी अभी. मशीन लर्निंग में कुछ सेलेक्टिव एल्गोरिथम आते हैं which I'll be covering in my today's slide. तो मशीन लर्निंग में हम कुछ एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं, लाइक इसकी कैटेगरीज होती हैं. They have the supervised machine learning and unsupervised machine learning. Deep learning में हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं, that is neural networks. Okay. Now coming on to then what is this gap? यहाँ पे क्या आएगा फिर? तो यहाँ पे टर्म्स आती हैं, let's say natural language processing, computer vision, ठीक है? These kind of terms, text processing, and many other such things, they come in this gap which is there between artificial intelligence and machine learning. Fine. So these gaps are filled by technologies like natural language processing, or you're going for text processing, or you're going for image processing, or you're going for computer vision, and so on. So the whole circle represents artificial intelligence. Machine learning is a part of artificial intelligence, and deep learning is a very small part of machine learning. उसमें सिर्फ एक ही चीज कवर होती है, that is neural networks. And neural networks are, again, I have a slide which covers the concepts of neural networks. So neural networks are nothing but they are replication. They are try to replicate our brain, the way the brain works. ठीक है, तो हम मशीन लर्निंग के बारे में भी देखेंगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन डीप लर्निंग के बारे में भी देखेंगे. So I hope this is clear to you. What is the difference between AI, ML and deep learning? Now, before moving ahead, I will also tell you one thing. There are 3 terms which are confused many times. आप कभी job openings के लिए भी देखोगे तो कहते हैं कि we require, first is data scientist, second is data analytics, third is data engineer. Come on, ये नाम सुना है कभी? अगर कहीं पे अप्लाई आपने किया हो तो कहते हैं कि वी रिक्वायर डेटा साइंटिस्ट. कुछ कंपनीज कहती है कि नो, वी रिक्वायर ओनली डेटा एनालिसिस, data analytics person. Then some says that we require data engineers. So again, these 3 terms, they are confused sometimes. So data scientists, they deal with the problems of machine learning. Okay, they deal with prediction of data.
दे एनालाइज द डेटा। ये लोग क्या करते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, ये डेटा को लेते हैं फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, बहुत सारी जगह से डेटा आता है, दे इंटीग्रेट द डेटा, दे प्री प्रोसेस द डेटा, फिर एक मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगाते हैं, एंड फाइनली दे डू द फ्यूचर प्रेडिक्शन। दिस इज द रोल ऑफ डेटा साइंटिस्ट। डेटा एनालिटिक्स की बात करें तो जो डेटा एनालिसिस होता है किसी कंपनी में, वो क्या करता है, दे फाइंड द हिडन पैटर्न। उनके पास डेटा होता है, इस डेटा से हिडन पैटर्न निकालते हैं। हिडन पैटर्न मतलब जब आप देखोगे कि आपके पास 1 लाख डेटा है, ठीक है, अब उसको अगर डेटा को नंबर्स में देखते हैं तो उस नंबर्स को देख के नथिंग इज पॉसिबल, मगर अगर उस डेटा का कुछ विजुअलाइजेशन हमने कर दिया, मतलब उसके अगर ग्राफ्स बना दिए हमने, उसका एक डैशबोर्ड बना दिया, तो वहां पे उस डेटा को एनालाइज करना बिकम्स वेरी इजी। So that is the role of data analysis or data analytics person. Coming on to data engineer, data engineer deals with terms like SQL, कि SQL से database लेने, कि SQL से data को कैसे connect करेंगे। फिर they also deal with big data. Big data भी आपने पता नहीं कभी सुना है कि नहीं सुना है। बिग डेटा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो दे डील विथ बिग डेटा, दे डील विथ डेटाबेस, दे सी द कनेक्टिविटी, नॉट जस्ट नो एसक्यूएल, दे ऑल्सो डील विथ नो एसक्यूएल। ऐसे बहुत सारे डेटा के साथ वो डील करते हैं। एसक्यूएल हो गया, नो एसक्यूएल हो गया, Oracle हो गया, and so on. Fine. And they deal with big data. Then again, they do some processing and produce their results over there. Very good, Sanyukta. Very good. Now, I'll tell you the tools also. अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट हैं तो आप कौन कौन से टूल यूज करेंगे? समथिंग लाइक R, समथिंग लाइक Python, ठीक है। Then Java is also there. We can apply the data science, which is very common tool amongst the data scientist. इन सब के अंदर सबसे favorite tool कौन सा है data scientist का? That is Python. Okay, if you are a data analysis, then you will be dealing something like Tableau. ये भी टर्म आपने सुनी होंगी, सुनी जरूर होंगी। Tableau हो गया। Then you deal with Power BI, ठीक, जहां पे आप डैशबोर्ड्स प्रेजेंट कर सकते हो, एंड सो ऑन। इफ यू आर अ डेटा इंजीनियर, देन द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज व्हिच यू विल बी यूजिंग विल बी हडूप, ठीक है। आप हडूप पे बात करेंगे, AWS पे बात करेंगे, एंड सो ऑन। So I've just given you a idea about what are the different roles of data scientist, data analytics, and data engineer. But see, many of the companies, they want one person to know everything. उनको डेटा साइंटिस्ट भी चाहिए, डेटा एनालिटिक्स भी चाहिए, डेटा इंजीनियर भी चाहिए, मगर अलग अलग रोल में नहीं चाहिए, एक ही रोल में चाहिए। फाइन। सो दीज आर द थिंग्स। आई थिंक नाउ द रोल्स इज वेरी क्लियर, क्या क्या टूल आपको आने चाहिए और किस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो। दिस इज क्लियर टू यू? What is the difference between data scientist, data analytics, and data engineer? Come on, quickly, I need a response. Very good. Thank you so much, Sudhvi. What about others? Any questions if you have till now? Okay, then let me continue with my slides. So I was on to machine learning. So machine learning algorithms work. Exactly, Aditi, yes. See, ये कोई अलग अलग रोल नहीं है, ठीक है। जो डेटा इंजीनियर है वो डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिटिक्स भी कर सकता है, डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिटिक्स भी कर सकता है। तो 1 पर्सन कैन नो। अब वो तो आपका है ना कि आपको कितने स्किल्स आते हैं, ठीक है। जब आप कोई जॉब की पोस्टिंग देखोगे ना, तो कई बार कंपनीज इसी तरीके से वो अलग अलग भी नहीं करती, दे राइट ऑल द रोल्स। Fine. So definitely a data engineer can do everything, a data scientist can do everything, a data analytics can do everything. It depends कि आपको कितना knowledge है, आपको कितना skill है. Fine. So now machine learning algorithms identify patterns and or predict the outcomes. So machine learning algorithms are used to predict outcomes given the data, like regression analysis, but on much larger scales with multiple variables. Now, a perfect example is algorithmic trading, where trading model must analyze vast amounts of input data and recommend profitable trades. मतलब स्टॉक मार्केट्स के अंदर सपोज अगर मैंने कहीं पे अपना अमाउंट लगाया है, कहीं पे मैंने अपना पैसा लगाया है, तो कैन आई हैव एन एल्गोरिथम व्हिच कैन डू दिस स्टॉक एनालिसिस प्रिडिक्शन, और वो मुझे बता सके कि अच्छा आज आप आपका पैसा इस स्टॉक में लगा दो, आने वाले 5 साल में इट विल बी अ प्रॉफिटेबल डील। फाइन। सो दिस इज द डिफरेंस। अभी एक बहुत
कॉमन क्वेश्चन अगर कोई मुझे आंसर कर सके कि ये काम तो हम डेटाबेस, हैव यू वर्कड विद एसक्यूएल? कभी किसी ने काम किया है क्या एसक्यूएल से? जैसे अगर आपके पास डेटाबेस है और एक मशीन लर्निंग है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल डेटाबेस एल्गोरिथम्स एंड द मशीन लर्निंग? क्या कर सकते हैं, जैसे अगर सपोज आपके पास डेटाबेस है एक क्लास के 10 क्लासेस का डेटा है, ठीक है? अब आपको पता करना है इन दीज 10 क्लासेस हाउ मेनी मेल स्टूडेंट्स आर देयर एंड हाउ मेनी फीमेल स्टूडेंट्स आर देयर। तो ये काम आपका डेटाबेस का, एक आपने एसक्यूएल की क्वेरी रन करो एंड यू विल हैव द आंसर्स। फाइन, सपोज आपको पता कराना है कि इस 10 क्लासेस के अंदर किस क्लास का रिजल्ट सबसे अच्छा आया था पिछले साल, तो यू कैन डू दैट। मगर अगर आप एसक्यूएल यूज कर रहे हो तो कैन यू फाइंड कि आने वाले साल के अंदर इस 10 क्लासेस के अंदर कितने स्टूडेंट्स प्लेस्ड होंगे based on to their previous result? Can we have this answer? If you're using SQL, come on, quickly answer me in the chat window. I hope my question is clear. I'm again repeating my question. My question is, can using the SQL query, you can find key in the coming year, how many students will be placed based on to their previous result? Can these answers be given using SQL? Exactly, Aditi. SQL doesn't have that capability, क्योंकि SQL जैसे जो relational databases होते हैं वो सिर्फ किस चीज का आंसर कर सकते हैं, जो आपके पास ऑलरेडी डेटा है उसके बेसिस पे. They cannot do the future prediction. But here comes the role of machine learning algorithm. They are used for future prediction. आपकी previous history के basis पे they can give you the answers for your future. This is the power of machine learning. Okay. So again, I hope I'm able to clear all the concepts over there. Okay, if we see the applications of machine learning, then it is used to find the insights or patterns in large data sets. You can do lots of data in less time. Now, this is one of my favorite example. बहुत लोगों ने देखा होगा Netflix अभी, as I'm saying, we are on these difficult times of COVID. सब लोग घर पर हैं, lockdown is there. तो maybe instead of your learning, सब लोग पढ़ भी रहे होंगे. I'm not denying that, but we have this tendency कि ठीक है अभी बोर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, so we switch on to OTT platforms like Netflix and Amazon Prime and Woot and many others. So you can see that what is the statement given by Netflix. They says that they invest heavily in machine learning to continually improve our member experience and optimize the Netflix service end to end. इसको कहते हैं movie recommendation system or your web series recommendation system. Netflix applies machine learning to your viewing history to personalize the movie, TV show recommendations you see. Netflix also analyzes what you and people with similar preferences watched in the past and even auto-generates personalized thumbnails and artwork for movie titles to entice you to click on a title that you would otherwise ignore. अब अगर नेटफ्लिक्स के अगर एग्जाम्पल लें तो एक हॉरर मूवी के जॉनर के अंदर उसके अंदर 1000 पिक्चर है. अभी आपको सारे 1000 मूवीज के बारे में नहीं पता होता है ना, बट नेटफ्लिक्स मेक थिंग्स इजी फॉर यू. वो आपको इतना वेराइटी ऑफ ऑप्शंस देंगे, तो इसीलिए तो लोग नेटफ्लिक्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और अमेजॉन प्राइम, और दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद समथिंग. व्हाई? बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग हेवीली इन सच काइंड ऑफ थिंग्स. एंड व्हाई नेटफ्लिक्स? इसीलिए तो आप देखो अभी डेटा साइंस इज ऑन सो मच बूम because everybody is talking about it. You name it and that organization require a data analyst or a data scientist and so on. Now coming on to neural networks, again I'll be giving you some very nice examples of neural networks. So what is neural networks? They tries to replicate the human brain approach to analyzing the data. सबसे easy example है इसका कि deep learning एक बहुत छोटी सी field है, but again it is very much talked about क्योंकि deep learning की जो accuracy है वो बहुत ज़्यादा high होती है, ठीक है? मगर इसकी एक problem है कि यहाँ पर we need to give lots of data, and with lots of data in the coming slides I'll tell you क्या मतलब है lots of data का, ठीक है? Now, as I've already shown you in my previous figure, that deep learning is a subset of machine learning. Okay, so see, China and USA, they are two big countries who are using the concept of deep learning and neural networks extensively. Okay, like China is doing lots of facial recognition, which makes sense because there are cameras everywhere, and same goes with USA also. Many cameras means plenty of data for deep neural networks to use.
Like there, some of the examples at university in Eastern China has implement AI powered attendance system with cameras that constantly observe students in class. It scans faces to check that the student actually turns up to a class. More importantly, it also analyzes facial expressions in real time and can judge whether students are paying attention or not. It can apparently recognize people are sleeping or playing on their phones. आप देख रहे हैं यहाँ पर मतलब आपकी कोई प्रिवेसी है ही नहीं. वंस यू एंटर द यूनिवर्सिटी और क्लास में अगर चले गए तो हर चीज पे आपकी नजर रखी जा रही है एंड अ ह्यूमन इज नॉट डूइंग दैट. सिंपली दे हैव प्लांटेड सो मेनी कैमरास कि वो हर आपकी पोजीशन पे you're there or not, you're paying attention or not, it is just keeping an eye on you. ओके. सिमिलरली अभी हम क्या करते हैं पेमेंट्स के लिए, अगर हमें कहीं पे भी जाना है, वी यूज गूगल पे, वी यूज पेटीएम एंड सो ऑन. ठीक है. नाउ यू सी देयर टेक्नोलॉजी. So while people are still talking about mobile payments using WeChat Pay and Alipay, these companies are already moving to the next level, that is face-based payments. So why bother with your phone when you can pay just by looking into camera? आपको कुछ कैरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद से किधर चले जाओ, आपका फेस ही आपका वॉलेट है. ओके. अगेन आई विल सजेस्ट यू डू सम रीडिंग. और Amazon भी ये शुरू कर रहा है. Amazon ने यूएसए के अंदर कई जगह अपने आउटलेट्स खोले हैं विद द नेम Amazon Go. वहां पर कोई कैशियर नहीं है. ठीक है. यू जस्ट एंटर. उनके जो बास्केट्स होते हैं दे हैव दीज फीचर्स. आप जो भी उसमें प्रोडक्ट डालोगे दैट विल बी स्कैन्ड. अगर प्रोडक्ट निकाल लिया तो प्रोडक्ट फिर से डी स्कैन हो जाएगा एंड वंस यू आर गोइंग आउट हर को चेकआउट भी अपने आप हो जाएगा. ठीक है. तो दे आर डूइंग दीज थिंग्स. दे हैव ओपन वेरियस ऑफ द outlets there in USA. So this is how the AI is working and deep learning concepts are working. Fine. So simply Alipay is also doing the same thing. They're using face recognition things for the payment. Now to fight the crime. So AI firms in China are using facial recognition to help law enforcement track suspects. You just see the number. Okay. They help the police to make over 10,000 arrests and is used in 29 Chinese provinces. It makes over 1 billion facial comparisons daily that has amassed over 100 million data points. आप देख रहे हैं इस data की massive, that how massive this data is. This kind of, if you want, that is why I was saying that if you want good accuracy in your algorithms of artificial intelligence, they require lots of data. और यहाँ पर lots of data का मतलब इस तरीके के data से है. ओके. स्पेशली इन डीप लर्निंग. अब इसके अंदर एक और चीज है कि जब आप इस तरीके के डेटा के साथ काम कर रहे हो देन योर सर्वर शुड आल्सो बी वेरी स्ट्रांग. अगर हम अपने नॉर्मल लैपटॉप की बात करें जो हम यूज करते हैं, वी कैन नॉट डू दीज प्रोसेसिंग आउट देयर. उसके अंदर तो हम अगर हंड्रेड्स ऑफ डेटा है हमारे पास या थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, उनके लिए नॉर्मल लैपटॉप्स ओके है. But if you are working with such huge kind of data, then definitely you require huge servers for doing the processing and all. Come on, till here, is it clear to everyone? Do you have any doubts, any questions, students? Anyone? And I hope you're getting the concepts also. I really need a quick response. I hope you're not sleeping and listening to me. Yes, students, I'm waiting for the responses. Okay, thank you so much, Aditi. What about others? Okay, thank you so much, Vijeta. Now coming on to more concepts of, thank you so much, Mehak, for, I'll make more concepts clear of machine learning by just giving you a simple example. You just see, you must have played a game like you have a bucket out there and you have a crushed ball. Okay? Now, what is your aim? That you want to throw this crushed ball into this kind of bucket. अगर नॉर्मल एल्गोरिथम इसके लिए बनाया तो वो नॉर्मल एल्गोरिथम क्या करेगा? सबसे पहले वो देखेगा व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द क्रश्ड बॉल. इट विल सी देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बकेट. आफ्टर दिस इट विल कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू. ठीक. फिर क्या करेंगे? इस पोजीशन से जब ये सब कैलकुलेशन कर लिया, इस पोजीशन से यू थ्रो द बॉल इन द बकेट, तो वो बकेट पे आराम से बॉल चले जाएगी. दिस इज द ट्रेडिशनल एल्गोरिथम. आपने हर चीज फीड कर दी,
position of the ball, position of the bucket, the distance between the two, and the angle also. I just forgot the angle also. किस एंगल से आप बॉल फेंकोगे तो उसमें जाएगी, और किस एंगल से बॉल फेंकोगे तो उसके अंदर बकेट में नहीं जाएगी. Now after this, what you do, no, you modified your game. You added a fan in the background. As soon as you will add the fan in the background, there will be an airflow. अब जब airflow डाल दिया तो क्या होगा, the position of this crushed ball will be same, the position of this will be same, but जो एंगल से बॉल जा रही है वो एंगल चेंज हो जाएगा अभी, बिकॉज वहां पे एयर का फ्लो भी आ गया. इन सच केस योर ट्रेडिशनल एल्गोरिथम विल फेल, इट विल नॉट वर्क. अगेन कौन रेस्क्यू के लिए आएगा ऐसे केसेस में? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या करेंगे, as soon as this kind of airflow has been introduced, वो recalculate करेगा हर बार कि what will be the perfect angle so that the airflow can also be taken into consideration. Okay, so this is where the ML algorithms, they are more superior than the traditional algorithms. I hope this is clear to everyone. Is this example clear? Okay, so for the same example, ML program would begin with a generic formula. मतलब machine learning भी generic formula से शुरू करेगा. What is the distance? What is the angle? But after every attempt or experience, it will refactor its formula. हर बार वो change करता रहेगा. अगर आपकी bucket की position बदल गई, अगर आपका air flow आ गया, अगर आपका angle change हो गया, तो it will keep on changing itself as the formula is continuously improved using more experiences and outcome to improve. So you see these things into action around in YouTube's video recommendation, Facebook's new feed contents, and so on. So that is why I've already told you earlier that artificial intelligence is now everywhere in our daily terms also. So again, why machine learning matters और क्यों इसके बारे में इतनी बात हो रही है? Because of it is used in computational finance like credit scoring, algorithmic trading, in image processing and computer vision. जैसे biometric के जितने भी system आप ले लो, maybe thumb recognition or iris recognition or face recognition और मोशन डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. कितनी बार आप देखो जब ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं एंड दे वर एबल टू गेट सच गुड पिक्चर्स, और वो कई बार ये भी काउंट करते हैं कि हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर. तो हर बार ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता. नॉट एवरी टाइम ह्यूमन इज गोइंग देयर एंड इट इज काउंटिंग आउट देयर. दे हैव these स्पेशल सेटअप्स आउट देयर जहाँ पे वो ये देखते हैं कि कितने यूनिक टाइगर्स थे, उनके फुटप्रिंट सिस्टम भी वो करते हैं, उनका कुछ बायोमेट्रिक सिस्टम भी वहां पे उन्होंने लगा रखा है, so that they can just find out these things very easily. Simply, again in medical field also, artificial intelligence and machine learning algorithms, they have taken the market. Then in energy production, कि अगर आप इसको लगा दो तो you can do the load forecasting. कौन सी स्टेट के अंदर किस सीजन में कितनी ज्यादा एनर्जी देनी चाहिए, you can apply it out there. In automotive, aerospace and manufacturing industry, in natural language processing, जैसे Alexa, again I've given you example. Siri in iPhone is one of the example. Google Assistant in Android phones is one of the example. They all are working with artificial intelligence and machine learning algorithms. Fine. Now again, this is a repetitive slide that where machine learning is used in handwritten rules for fraud detection, for the data which is keep on changing regularly, if you want to do some forecasting, for predicting shopping and so on. Now, this slide again is very, very important. Okay, how machine learning algorithm works. अभी देखो जो machine learning का algorithm होता है, it has two techniques. These are two common techniques actually. The supervised learning, which trains the model on known input and output data so that it can predict the future outputs. और दूसरी जो category होती है of machine learning, that is called the unsupervised learning, which finds the hidden patterns or intrinsic structures of input data. I'll give you a very good example of this. Suppose you want to buy a flat. So there is some previous, आपने क्या किया, कुछ previous data feeded है आपकी website के अंदर कि suppose for 2000 square feet, for 2500 square feet, for 3000 square feet and for 3000
500 स्क्वायर फीट, ये एरिया दिया हुआ है, उसके कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग प्राइस है. लेट्स से आई एम राइटिंग 20, that is 20 lakhs. This is, let's say, 25 lakhs. This is 30 lakhs. And this is 35 lakhs. I'm writing the price in lakhs. तो ये आपने डेटा आपके मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को दिया कि उसको क्या पता है कि अगर एरिया इतना है तो उसका इतना प्राइस है, अगर किसी फ्लैट का एरिया इतना है तो उसका इतना प्राइस है, इतना एरिया है तो इतना प्राइस है. इसके बाद आप क्या करोगे, यू विल अप्लाई मशीन लर्निंग, यू विल मेक अ मॉडल. मॉडल बनाना कुछ नहीं होता, जब मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को अप्लाई कर देते हो तो दैट इज कॉल्ड अ मॉडल. आफ्टर दिस यू वांट आंसर्स. अब जरूरी तो नहीं है कि आप जो फ्लैट लेने जा रहे हो उसका यही 3 या 4 एरिया हो. सपोज आपको एक फ्लैट लेना है जिसका एरिया है 5000 स्क्वायर फीट. Now, since this is machine learning algorithm, it will learn from the previous data and based on to previous learning, वो क्या बता पाएगा कि इस तरीके का फ्लैट अगर आप खरीद रहे हो तो उसकी रेट क्या होगी. Come on, is this clear to you? I need a quick response in the chat window if it is clear. Okay. This kind of data analysis where we know ये क्या है, इनपुट है कि ये तो एरिया इनपुट है और हमें चाहिए क्या, प्राइस. तो प्राइस मेरा क्या हो गया, आउटपुट. सो इफ यू आर फीडिंग योर मॉडल विथ इनपुट एंड आउटपुट बोथ, इस तरीके की टेक्निक को क्या कहते हैं, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मेथड. सो यू कैन सी फ्रॉम द डेफिनेशन आल्सो that supervised learning which trains a model on known input and output. आप जब अपना मॉडल बना रहे हो आपने उसको इनपुट भी दिया है और आउटपुट भी दिया है, so that it can predict future outputs. इसको कहते हैं supervised learning. Then there is another category which is called unsupervised learning, which finds the hidden pattern or intrinsic structures in the input data. उस केस में आप क्या करते हो, let me just clear this thing. So when you are following the unsupervised machine learning algorithm, तब you only let's say give some features. आपने कुछ आपके मॉडल को डॉग्स की पिक्चर्स दिखाई हैं और कुछ कैट की पिक्चर दिखाई है, ठीक है. अब you want to find, you want your model to classify कि इतने 100 of images के अंदर वो ये बता सके कि कौन सी इमेज डॉग की है और कौन सी इमेज कैट की है, ठीक है. तो दैट इज वन काइंड ऑफ लर्निंग दैट इज कॉल्ड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, जहां पर आप सिर्फ इनपुट देते हो और आउटपुट नहीं देते, बट बेस्ड ऑन टू सम फीचर्स योर एल्गोरिथम ट्राई टू फाइंड आउट. फाइन. नाउ इन between these categories there are two different further categories. Supervised machine learning can be further classified into regression models and classification model, and unsupervised has only one category which is called clustering. So supervised learning, I've already told you that you have known data for the output which you are trying to predict. It uses classification and regression. अब कब classification use करेंगे और कब regression use करेंगे. So classification predict discrete responses. Discrete मतलब 0, 1, true, false, yes or no. These are discrete responses. For example, whether the email is genuine or spam. सब लोग Gmail use करते हैं, सबको पता है कि कुछ आपके जो मेल होते हैं वो स्पैम के अंदर चले जाते हैं. How Gmail is doing that? Okay, that is one of the project you can work upon. So Gmail also applies this machine learning algorithm just to find out that the mail is a genuine mail. तो genuine mail को हम कहते हैं ham, और अगर वो spam है तो आपके spam के फोल्डर में चला जाएगा. Similarly, whether a cancer tumor is cancerous or benign. Cancerous मतलब पता है, benign मतलब कि उसमें कैंसर नहीं है. So these kind of techniques are called classification techniques. Then coming on to regression techniques, so they predict the continuous responses. जैसे अगर मुझे ये पता है कि पिछले एक हफ्ते से जयपुर का टेम्परेचर इतना चल रहा है, आने वाले एक हफ्ते में what will be the temperature of Jaipur? So that is something a continuous response. ठीक है, तो वो इस तरीके के क्वेश्चंस कहाँ पे जाते हैं, to regression techniques. So this is again one of the example of supervised learning. So what do you have? You have many data of a person, that they have the data of previous patient, उनका age पता है, weight पता है, height क्या है, blood pressure क्या है, and they know whether the previous patient had heart attacks within a year.
So the problem is combining the existing data into a model that can predict whether a new person will have heart attack within a year or not. तो किसी भी आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स की प्रीवियस हिस्ट्री है, जब आपके पास एक नया पेशेंट आ रहा है तो बेस्ड ऑन टू दैट, बेस्ड ऑन टू योर मॉडल, व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिडिक्ट कि इस पर्सन को विद इन अ ईयर हार्ट अटैक हो सकता है या नहीं हो सकता. Again, coming on to the next technique, which is unsupervised learning. Unsupervised learning में क्या होता है? We find the hidden pattern or intrinsic structures in the data. Fine. The technique which is used is called clustering. Clustering मतलब group बनाना. If we can make groups, and what is the property of these clusters? कि इस cluster के जो element है, they are highly correlated. इस cluster के जो elements है, they are highly correlated. But in dono, let's say this is cluster number 1, this is cluster number 2, then the elements of cluster 1 and cluster 2, they do not have any correlation. So this is the property of clustering. Fine. So you can see out there that we have a data set. अब हम कुछ एल्गोरिथम लगाएंगे जिससे हम पता लगा सकें कि इस पूरे डेटा सेट को कितने क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं. So for now this looks very easy. इसको हम 3 एक क्लस्टर में अगर डिवाइड कर दे तो द बेस्ड ऑन टू सम फीचर सेट्स. ओके, नाउ अब कमिंग ऑन टू द मेन क्वेश्चन कि हमने तो इतने सारी चीजें बोल दी कि सुपरवाइज्ड भी होता है मशीन लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड भी होता है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि विच टेक्निक वी शुड चूज, विच एल्गोरिथम इज बेस्ट फॉर अस? सी, दिस इज नोन एज प्रिडिक्टिव इंजीनियरिंग. ओके, ये एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है. Believe me, there are many of the data scientists who are working in this field and they're not able to judge कि आप कौन सा algorithm कहाँ पर लगाओ. But in the meanwhile, when you keep on learning, जब आप चीजें सीखते जाते हो, when you start playing your data, okay, then you have the knowledge कि अच्छा इस अगर ये data set मेरे पास आया तो यहाँ पर इस तरीके का algorithm हम लगा सकते हैं and so on. Again, I have this wonderful chart which explains the process of machine learning. I've already told you it is divided in 2 categories. इनके अलावा भी और categories होती हैं. They are the most popular one, that is why I've added them. So supervised and unsupervised. Supervised further divided होती है classification और regression में. Classification के अंदर you have variety of algorithms like SVM, discriminant analysis, naive based, nearest neighbors. रिग्रेशन के अंदर होता है लीनियर रिग्रेशन, एसवीआर, ensemble methods, decision trees, neural networks and so on. क्लस्टरिंग, ये भी कुछ एल्गोरिथम्स, इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है. क्लस्टरिंग के अंदर भी द फेमस एल्गोरिथम्स आर के मीन्स, हिरार्किकल क्लस्टरिंग, गॉसियन मिक्सचर, न्यूरल नेटवर्क्स, हिडन मार्कोव एंड सो ऑन. So that is why we say that this is a deep ocean. You know, data science field is a deep ocean. You keep on learning and learning. रोज नए एल्गोरिथम्स आ रहे हैं, रोज नई चीजों पे बात हो रही है, बट डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. ठीक है, तो कम से कम आप एक जब डेटा साइंस का कोर्स ऑप्ट करते हो तो यू नीड टू गिव योरसेल्फ 6 months टाइम और अ ईयर टाइम सो दैट यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द होल कोर्स. फाइन. So again, coming on to how to choose the supervised and unsupervised learning. For this, again, you need to play your data, you need to know your data. एक बार जब आपको समझ में आ जाता है कि हमारा डेटा किस तरीके का है, जब आप में वो अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, then you can simply decide. I will also tell you one very interesting fact. 80% of the time, the data scientist is simply preparing the data. मतलब वो डेटा को क्लीन करता है, डेटा को प्रिपेयर करता है, एंड ओनली 20% ऑफ द टाइम द डेटा साइंटिस्ट इज डूइंग द मॉडल मेकिंग या फ्यूचर प्रेडिक्शन. 80% ऑफ टाइम किसी भी डेटा साइंटिस्ट का किसके अंदर जाता है? फॉर क्लीनिंग द डेटा, प्रिपेयरिंग द डेटा सो दैट इट इज सूटेबल फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. और 20% में वो फटाफट से अपना प्रिडिक्शन भी कर लेता है, उसका विजुअलाइजेशन भी कर लेता है एंड सो ऑन. Okay, so I'm stopping my screen share for now. That is it from my side, students, from today. If you have any questions, I hope I was able to clear the concepts of what is artificial intelligence, what is machine learning, what is deep learning, what are the different roles of data scientist, data analyst, data engineer. मशीन लर्निंग कहाँ कहाँ पे काम में आती है, हाउ इज इट यूज्ड इन द इंजीनियरिंग फील्ड, इन द कॉमन मार्केट नाउडेज. प्लस वी हैव आल्सो सीन
that how many types of machine learning algorithms are there. एक घंटे के अंदर सब कुछ wrap up करना is very difficult, but I tried my level best. So that is it from my side, but I'm open for taking the questions if you have. So anyone, if you want to ask something or you want to come up with, the stage is open, come on. Otherwise, that is it from my side. Thank you so much, Aditi. Anyone, come on, do you have any questions, anything? I'm ready to take the questions. Okay. Anyone? If you have any questions for us, if you want to share something, come on, students. Anything? It's excellent, Aditi. Let me tell you, if you want to opt, if you want to go for being a data scientist, for now, there are ample of opportunities, ample of opportunities. You should start learning from where you should start learning it. See, there are various platforms from which you can start. Like we are in the market. Apart from us, there are other organizations also. So you just join something, opt for certain courses. If you want to do it yourself, you start learning first the tools. Let's say language aani chahiye. Python is the common language and the tool which people are using for machine learning. So आप कोई भी tool सीखना शुरू करो, language सीखना शुरू करो. Yes, Aditi, definitely you can go for Coursera also. Coursera पे courses है, Udemy पे courses है, बहुत सारे हैं जो offer कर रहे हैं आपको. So you just opt these courses. Okay. I'm also sharing this information. You can take our information also. Again, I've told you we are situated in Jaipur. You can take the information, you can take the screenshot, you can just contact us also. Okay. So any Thank other you so thing? much. Yes, ma'am. Yeah, thank you so much, ma'am, for this wonderful session. It will definitely enhance the knowledge of our student in the field of AI. If any student have any query, then she can ask to Shruti ma'am. Yes. Please write Anyone? in the chat box. Okay, one tip I want to give, if you want to start your career as data scientist, start learning a tool. Maybe Python, R पे आप जाना चाहते हो, IoT uses machine languages. Any example? Yes, Anju, IoT is also one of the field which is like Internet of Things. The people who do not know the full form of IoT, यहाँ पर भी Python is used extensively. But in IoT, you connect, the software with your hardware part also. Okay, so if you want to go with IoT, definitely IoT also uses the machine learning algorithms plus the artificial intelligence also. Wants about AI, so according to you will rule. Sayukta, it will take lots of time. अभी बहुत time है. मगर अगर ये सोचे हम कि वो हमारे ऊपर rule कर लेगी AI और इसलिए हम सीखना बंद कर दें, so that is not the good thing. बहुत सारे हैं विजेता, दे आर मेनी मेनी प्लेटफॉर्म्स. जैसे अभी हमने बात की, कोर्सेरा है, यूडीमी है, और भी बहुत सारे. यूट्यूब पे भी आप सीख सकते हो. यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं. देयर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो हु यू कैन जस्ट जॉइन, टेक अ कोर्स एंड यू कैन लर्न. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल यू कैन लर्न. अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो लाइव सेशन से ही सीखना है एंड आई वांट समवन कि वो मुझे गाइडेड मोड में सिखाए, तो कोर्सेरा एंड यूडीमी वोंट हेल्प. ठीक. और अगर आपको लगता है कि नहीं आप खुद से ही सीख सकते हो, तो फिर बहुत सारे यूट्यूब पे आप चले जाओ, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं. सेम अदिति, आंसर इज सेम. ठीक है, अगर आप बिग डेटा सीखना है, कुछ भी आपको सीखना है, तो अगेन यू नीड टू चूज फर्स्ट कि कौन सा मीडियम आप चूज करना चाहते हो. यू वांट टू लर्न योरसेल्फ कि आपको कोई गाइडेड मोड में चाहिए कि मुझे लाइव सेशन चाहिए. सुरभि सी, ये सिर्फ टूल है. डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए पाइथन इज वन टूल. लोग आर पे भी काम करते हैं, लोग जावा पे भी काम करते हैं, टैबलू पे भी काम करते हैं, पावर बीआई पे भी काम करते हैं. डेटा साइंटिस्ट इज नॉट जस्ट लर्निंग पाइथन. ठीक, डेटा साइंटिस्ट के पीछे बहुत सारी मैथमेटिक्स है. लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, यू शुड बी फ्रेंडली विद मैथमेटिक्स, यू शुड बी फ्रेंडली विद स्टैटिस्टिक्स. ठीक, ये सब चीजें भी आनी चाहिए. उसके लिए इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए नीड समथिंग, एंड पाइथन इज दैट लैंग्वेज.
बिग डेटा के लिए अगेन यू कैन गो विद पाइथन. हडूप पे काम करता है, इसीलिए मैंने कहा कि जावा इज वन सच लैंग्वेज. सो पीपल गो ऑन हडूप, हाइव एंड सो ऑन. वहां पर जावा काम में आती है इफ यू वांट टू ऑप्ट द करियर एज बिग डेटा साइंटिस्ट. Okay, so first you make your mind clear what you want to do. 5G network enhance, does 5G network enhance the AI? Again, it is one topic which you can keep on talking on to. Yes, 5G, artificial intelligence, it is applied everywhere. If you work with 5G network, definitely it will enhance AI, because you will require lots of network things and so on. No, Vijeta. नथिंग इज रिक्वायर्ड. अगर पहले से कोई प्रोग्राम, कभी कोडिंग में काम नहीं भी किया ना, तभी भी पाइथन इज सो इजी कि यू कैन लर्न इट इजीली. इसीलिए पीपल आर ऑप्टिंग फॉर पाइथन. अभी पाइथन इसीलिए इतनी ज्यादा कॉमन है कि जो कोडिंग के बैकग्राउंड से नहीं है वो भी पाइथन सीख सकते हैं. इट इज वेरी इजी टू लर्न. ओके. So people who are from civil engineering, mechanical engineering, they are now moving on to Python because it is very easy to learn. It is very English-like thing and so on. इसीलिए इतना ज़्यादा आजकल famous है Python. So students, if any one of you want to do the training or internship in the field of AI or machine learning, then you can also get online training under the Shruti ma'am and contact to me directly for the more information. So thank you so much, Shruti ma'am. Thank you, so much, Principal ma'am, for being part of this session. Thank you all the teachers and dear students. It was a really wonderful session, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you.